अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आरओ प्लांट से रिलेटेड मंदरजा झेल टॉपिक स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मेम्ब्रेन स्केलिंग। नंबर टू, स्केलिंग मैकेनिज्म यानी हाउ स्केलिंग हैपेंस। नंबर थ्री, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्केलिंग ऑन आरओ मेम्ब्रेन्स। नंबर फोर, हाउ टू प्रिवेंट स्केलिंग। So let's start our video and study what is scaling. Membrane scaling refers to the accumulation of inorganic minerals deposits on the surface of RO in a reverse osmosis membrane in water treatment plant. Scaling occurs when the concentration of certain dissolved solids exceeds their solubility limits, leading to the precipitations and deposition of these solids onto the membrane surface. Scaling can have adverse effects on RO membrane performance, including reduced permeate flow, decreased salt rejections, increased pressure differentials, and higher energy consumptions. Here's how scaling happens and its effects on oral membrane and how to prevent scaling. Scaling mechanism यानी how scaling happens on oral membrane. Scaling can occur due to various mechanisms including calcium carbonate scaling. When calcium and carbonate ions exceeds their solubility limits, they can precipitate as calcium carbonate. Scale commonly known as hard water scale. Calcium sulfate scaling. High levels of calcium and sulfate ions can lead to calcium sulfate in CaSO4 scale formation, known as gypsum scale. Silica scaling. Elevated levels of dissolved silica in SiO2 can form insoluble silica scale on the membrane surface. Barium and strontium scaling. Barium Ba2 plus and strontium Sr2 plus ions can form scale when present in feedwater at high concentrations. ये सब चीज़ें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग का किस्म है, कैल्शियम सल्फेट एक स्केलिंग का किस्म है, सिलिका स्केलिंग का किस्म है, बेरियम एंड स्ट्रोंटियम स्केलिंग का किस्म है। पानी में इन अज्जा की मौजूदगी की वजह से स्केलिंग हो सकती है। अब इन स्केल का आरओ मेम्ब्रेन पर क्या इफेक्ट हो सकता है? इन इफेक्ट्स ऑफ स्केलिंग ऑन आरओ मेम्ब्रेन। स्केलिंग की वजह से आरओ मेम्ब्रेन बहुत मुतासर हो सकते हैं और चंद एक मंदरजा झेल इफेक्ट्स इस पे पड़ सकते हैं। Scaling reduces the effective membrane area available for water permeation, thereby decreasing the permeate flow rate. And it can decrease the permeate flow. Scaling also causes an increase in the pressure differential across the membrane, resulting in higher energy consumption. The presence of scale deposits on the membrane surface reduce salt rejection efficiency, leading to decreased water quality in the permeate. इसकी वजह से डिफरेंशियल इन स्केलिंग की वजह से डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है जिसकी वजह से हाई एनर्जी कंजम्पशन होती है। इसके अलावा इससे सॉल्ट रिजेक्शन में भी कमी आ सकती है जो कि आरओ की यूनिट की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। सो ये चंद मंदरजा इफेक्ट्स है जो कि स्केलिंग आरओ मेम्ब्रेन पर डाल सकता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? यानी प्रिवेंट स्केलिंग इन आरओ प्लांट्स। Proper pre-treatment. Implement effective pre-treatment process to remove or reduce the concentration of scaling potential minerals in the feedwater. These may involve processes such as sediments filtration, multimedia filtration, activated carbon filtration, water softening, or anti-scaling dosing. Anti-scalant chemicals. Use anti-scalant chemicals specially designed to inhibit the formation and precipitation of scaling minerals. Antiscalants work by binding to the scaling ions, preventing their aggregation and precipitation onto the membrane surface. Dosage and selection of antiscalant should be based on feedwater analysis and in consultation with water treatment specialist. pH adjustment. Maintain the appropriate pH range in the RO system to minimize scaling potential. pH control can be achieved through chemical dosing or pH adjustment using acid or caustic solutions. Cleaning and maintenance. Regular clean and maintain
the RO system to remove any potential scaling deposit that may have formed. Implement a routine cleaning schedule based on membrane manufacturer's recommendation and system performance indicators. Monitoring and control. Continuously monitor key parameters such as pH, temperature, pressure, flow rates, and concentrate conductivity to detect any deviations that may indicate scaling potential. Implement automated monitoring and control system to maintain optimal operating conditions. System design consideration. Consult with water treatment specialist during the design phase of the RO plant to ensure proper system sizing, flow rates, and recovery ratio to minimize the risk of scaling. By implementing effective pre-treatment using antiscalant chemicals, maintaining proper pH level, conducting regular cleaning, and monitoring the RO system, scaling issues can be minimized, ensuring optimal performance and longevity of the membrane. Please remember to consult the water treatment professionals or membrane manufacturers for specific guidance based on your plant requirements and feed water characteristics. तो आज की वीडियो में हमने मंदरजा वाला चीज़ें स्टडी की हैं कि स्केलिंग क्या चीज़ है। उसके अलावा हमने स्टडी किया है कि स्केलिंग मैकेनिज्म यानी स्केलिंग किस तरह मेम्ब्रेन पर हो सकता है और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं मेम्ब्रेन पे या आरओ प्लांट पे और इसको किस तरह रोका जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है इसकी आपको समझ आ गई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हौसला अफजाई हो। अस्सलाम वालेकुम।